we continue this lessons, and in this the parasitism, it is a relationship between the two organisms of the different species where one parasite gets benefited and the other is the host, is harmful for the main thing is the we can know that the harmful to the host, and generally the parasites are much smaller than the host, and it is also that the parasite reproduced at the faster rate than the host. Example is the tapeworm, liver fluke, plasmodiums, and these various types of the species where these types of the parasites are present inside and outside of the body of the host. On the basis of their presence, they are of two types, and we can see that the various types of the parasites, they are present inside like the tapeworm, and the others are present inside and outside of the host and getting feed from the host. Then parasitoid, they generally kill, but the parasitism need not to do. The parasitoid are organisms whose larval development occurs inside or on surface of another organism, resulting death of the host. Then the types of parasitism on the basis of interactions with the host and the life cycles, they are of two types. Number one, ectoparasite, which live on the surface of the host. ये क्या है कि ectoparasite जो कि अपने host के जिस्म के बाहर अपनी जिंदगी गुजारता है. Number second is an endoparasite which live inside the body of the host, जो कि अपने host के जिस्म के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेगा. The types of endoparasites is the intercellular and the intracellular. Other parasites, depending on the vectors like the protozoans and the plasmodium, bacteria and the viruses, they are present inside the body of the host. They are look like the example is the plasmodium transported by the female Anopheles mosquito. The female Anopheles mosquito is the vector and transmit this plasmodium vivax from vector to the human being. Then the seculina is a parasite lives in the abdomen of the crab, and the crab is a vector. यानी कि ये इसको क्या करेगा, ये पहुंचाने का काम करेगा या ले जाने का काम करेगा, इसलिए इन एनिमल्स को वेक्टर कहा जाता है. Then epiparasites or the hyperparasitism is a relationship in between the one parasite feed on the another. एक पैरासाइट दूसरे के जिस्म पर पाया जाएगा. ये पैरासाइट which is in the turn feed on its host, यानी कि ये दूसरे पैरासाइट को होस्ट की तरह इस्तेमाल करेगा. एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटोजोअन्स लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फ्ली, लिविंग on a dog. The social parasite is a take advantage of the interactions between the members of the social organism, such as ants and the termites. These are the. Then the kleptoparasitism, in this parasite steal food gathered by the host. Example is a brood parasitism seen in the cuckoo, which never built or the nest but deposit her eggs in the nest of the other species. इसमें क्या होगा कि कुकू जो करेगी नेस्ट नहीं बनाएगी, बल्कि अपने एग्स किसी दूसरे के जो है नेस्ट में जो है क्या करेगी, दे देगी. द होस्ट behaves as a baby sister as they raise the young one. अब उसमें जो दूसरा जो परिंदा रहेगा वो उसको जो है अपने बच्चों की तरह जो है उसकी परवरिश करेगा. लेकिन ये जो है क्या होगा कि किस तरह से ये कोयल का या कुकू का जो है जो
अंडे को जो है ये सहने का काम या हैचिंग का काम करेगा. Then adelphoparasite, a parasite in which the host species is closely related to the parasite, belong to the same family or the genus. Then the example is the citrus black fly, parasitoid Incercia perplexa, unmated females of which may lay the haploid eggs. In this fully development, the larva of their own species, this is the results of the production of male offsprings. Then these look like this, the various types of the animals. Then the marine worm Bonilia viridis has the similar reproductive strategy. And then the next one is predaceous. The predaceous energy fixed by the autotrophs flow food web. It is the chain, one animals to the another. This energy is due to the predations. Means the energy can flow from the one animals to the another. First one is a carnivore. Animals eat each other and form the various levels of the food pyramid. Then the population of the prey and the predator species control each other and the balance ecosystem. ये इस तरह का होगा कि हर एक जानदार एक दूसरे पर मुनहसर रहेगा, यानी कि हर एक की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम इस तरह से एनिमल के ज़रिए होगा. पॉपुलेशन प्री ऑफ द प्रीडेटर स्पीसीज कंट्रोल द ईच अदर इन द बैलेंस इकोसिस्टम, जिससे कि इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा. बोथ हर्बीवोर एंड द कार्निवोर अडॉप्ट themselves for the pre-predatory relationship. ये एक दूसरे से रिलेटेड करेगा क्योंकि वो एक दूसरे से क्या करेगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे. दिस इज द कॉल्ड एज अ प्रीडेशंस. तो ये एनिमल्स जिस तरह से दिखाया गया है कि ये शिकार करेंगे और ये जिसकी वजह से यानी कि जो मीट खाने वाले और जो है ग्रास खाने वाले जो जानदार है इनकी तादाद या इनकी जो है इसको कंट्रोल करने का काम जो है, और जिससे कि जो है ये एक दो जो है अगर हम कहें कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा ये एनिमल्स का. देन reproductive cycles of the both are also adapted. Herbivorous reproduce when the plants are available and the carnivorous do so when the carnivore population goes up. यानी कि अगर हम देखें कि ग्रास अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा कि उसको इस्तेमाल करने वाले एनिमल्स जो है उनकी तादाद में इजाफा होगा, और जब एनिमल्स की तादाद में इजाफा होगा तो उनका जो है इस्तेमाल करने वाली या गोश्त का इस्तेमाल करने वाले एनिमल्स का भी इजाफा होगा. द प्रीडेटर पॉपुलेशन इज टू दैन द प्री माइट द बिकम द एक्सटिंक्ट एंड दैन द प्रीडेटर विल द फॉलो. टू सर्वाइव द प्री पॉपुलेशंस हैज इवॉल्व्ड द वेरियस defenses. Some species of the frog are cryptically cleared to take advantage of the camouflage. The monarch butterflies are not preyed upon by the birds due to its bad taste resulting from the poisonous secretion which develops in the larval stage when it feeds upon the poisonous weed. This is the characters of the animals. For the protection itself from the enemies or predators, they giving the bad odor or the poisonous. Therefore, they protect ourselves from the predators or the enemies by these types of the process. Then they are look like this, and because of the colors, they cannot जो है वो अपने आप को दिखा नहीं पाएंगे, जिससे कि उनका जो है प्रोटेक्शन रहेगा, उनका क्लियर जो है एटमॉस्फेयर के एतबार से रहेगा, जिससे कि वो अपने एनिमी से बचे रहेंगे. तो ये भी एक तरीक़ा रहेगा जो इसको जो है अपने आप को बचाने का रहेगा. तो इस तरह से ये क्लियरफुल जो है होने की वजह से ये अपने आप को बचा लेंगे.